हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स। तो आज बहुत ही अच्छा लॉन्ग आंसर लेकर आए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चार्ल्स लैम एज एन एसेइस्ट या चार्ल्स लैम इज कॉल्ड द प्रिंस अमॉन्ग इंग्लिश एसेइस्ट। डिस्कस the contribution of Charles Lamb as an essayist to English literature. Next है discuss the silent feature of Charles Lamb's essay। तो इन सभी के लिए जो आंसर है वो यही है गाइस, तो आप देख लेना। स्टार्ट करते हैं। कुछ ही का मैं मीनिंग बताऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो इतना सही नहीं रहता। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो चार्ल्स लैम्ब 1775 से 1837 तक इनका कैरियर रहा है। तो इज आ शाइनिंग स्टार इन द स्काई ऑफ इंग्लिश एसे। कितना टॉप का सेंटेंस है गाइज। चार्ल्स लैम्ब एक चमकता हुआ सितारा है इंग्लिश एसे के आकाश में। He is called the prince among English essayists. As an essayist, he is second to no after Francis Bacon. Francis Bacon is undoubtedly the father of English essayists. The Charles Lamb is called the prince among English essayists. Charles Lamb's readers appreciate him for his wisdom, humility, genuine humor, profound pathos, sweet temperament. It is right to say. To English essay, Charles Lamb is what Shakespeare to English drama. मतलब इंग्लिश ऐसे के लिए चार्ल्स लैम्ब वो है जो इंग्लिश ड्रामा के लिए शेक्सपियर है, और स्पेंसर और मिल्टन इंग्लिश पोइट्री के लिए हैं, और फील्डिंग और जॉर्ज इलियट इंग्लिश फिक्शन के लिए। ऑटोबायोग्राफिकल एंड पर्सनल नोट की बात करें तो हम चार्ल्स लैम्ब्स essays are personal and autobiographical. They reflect his nobility of his soul, good nature, his simplicity, his geniality, and his charity. Lamb talks about his relatives, friends, and acquaintances, but he is silent about the murder of his mother for the sake of his sister. It was she who killed Lamb's mother. She is friendly and ultimate with the readers. He frankly tells us about his childhood, his boyhood, and his manhood. If we wish to know the life and circumstances of Charles Lamb, we need not to read anything except of his essays. He is the greatest egoist without the touch of egotism. कहने का मतलब अगर आपको कुछ भी चार्ल्स लैम्ब के बारे में जानना है तो आपको उसके ऐसे ही पढ़ लेने हैं बस, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको। उसके ऐसे ही पढ़ लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। His lyrical quality in his essay make him a pleasing essayist. His essays are like lyrics which gives a sincere expression of the personal view of writers. From the first to last, the essays of Elia are the series of meditation with lyrical charm. In this matter, Jerome Sampson says, Charles Lamb's finite essays are the nearest of all to poverty, not only because they often touch the highest where prose passes into poetry. अगला mingling of humor and pathos. The mingling of humor and pathos is the another chief quality of Lamb's essay. He loves fun, but at the same time he is not all about pathos. All his important essays are full of humor and pathos. Humor is just like silver linings in the clouds of pathos. His humor is a blend of joys and tears. Joys, guys, ये JOYS. Actually, Dream Children is remarkable for his blend of pathos and humor. Lamb had suffered a lot in his life, but he never wept because he knew that weeping cannot bring any other things but humiliation. This is why he mixed pathos with humor. He knows that life means a combination of tears and laughter. His essays, Dream Children, is remarkable for the blending of humor and pathos. Variety of themes. The essays of Charles Lamb exhibit infinite variety. His essays satisfy the opposite of a true visualizer of memory. मतलब मेमोरी को विजुलाइजर करते हैं. His essays give a glimpse into his life and thoughts. His essay Dream Children is not
फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन इट इज नथिंग बट रिवरी। ये कुछ नहीं है, एक यादें हैं। द रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दिस एसे इज द डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन लैम। मतलब ड्रीम चिल्ड्रन जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, उसे लिखने का जो चार्ल्स लैम का उद्देश्य है, वो उसका भाई जो है जॉन लैम, उसकी डेथ हो गई थी, और कुछ नहीं है बस। इट इज फुल ऑफ पैथट, ये पैथट से भरा हुआ है। नॉट अदर एसेइस्ट हैज पास इनटू इक्वल डिग्री द पावर टू चार्म। ही बॉट perfection to art of essays writing. He is Charles Lamb. It is Charles Lamb who combines all the essential elements of essay writings in his essay with a great aesthetic silence. His wisdom and goodness. His essays are full of wisdom and goodness. From beginning to end, they are infinitive with wisdom. Charles Lamb was one of the wisest of men, gifted with second common sense. He has a marvelous power of comprehension and interpretation. The bitter experience of his life made him wise and thoughtful. He was really a man with wisdom, common sense, power of judgment, and self-sacrificing nature. His critical essays are a living testimony of his readers. Fact and fiction. The essays of Charles Lamb, marked by blending of fact and fiction. Fact and fiction has been very cleverly blended in his essay. Often, Charles Lamb often charts the name of his relations by blending fact and fiction. It is only due to his love of mysticism and that Charles Lamb has written his most essay under the name Elia. Walter Peter says that each and every essay we feel the vein of its subjectivity. Next is prose style. Prose style. The style of Charles Lamb is the expression of his personality. उसकी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करता है प्रोज स्टाइल उसका. हिज स्टाइल इज इनिमिटेबल. हिज स्टाइल इज नेचुरल एंड ऑर्गेनिक. अलॉन्ग विद इट ही इज रिमार्केबल इन्फ्लुएंस्ड बाय द 17th century राइटर्स लाइक ब्राउन, बर्टन, फुलर. मतलब 17वीं शताब्दी के जो 3 राइटर थे, इनसे ज्यादा प्रभावित था. जेसी पॉयस राइट्स लिखता है, क्या लिखता है? इलियास स्टाइल is the only thing in English prose that can be called absolutely perfect. आगे देखते हैं conclusion. To sum up about time, it can be said that Charles Lamb is the greatest essayist of 19th century. In short, Charles Lamb's के जो ऐसे हैं, चार्ल्स लैम्स के ऐसे हैं, अपोस्ट्रोफीज लास्ट गाइस बाद वाले पे आएगा, लैम्ब वाले पे धोखे से लग गया इस पर. Essays have been a perennial source of interest and delight to all the readers of English readers. मतलब कहने का मतलब चार्ल्स लैम्ब के ऐसों को पढ़ के आप उसके बारे में सब कुछ जान जाओगे, और इन्होंने इतना कुछ लिखा है, अपनी लाइफ के बारे में ही लिखा है. फाइनली हम कह सकते हैं लैम्ब के जो ऐसे हैं हमें पाठकों को बहुत ज़्यादा आनंदित करते हैं. तो आज के वीडियो में इतना ही. वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.